Welcome back to Cricket. This is Uzair Aman and we've got a big breaking news for everyone. पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया है for the 2 Test match series against West Indies और there have been 7 changes made to the squad that was chosen for the South Africa series जो कि अभी recently conclude हुई है. तो जल्दी से स्क्वाड पे एक नज़र डाल देते हैं. So we've got Shan Masood as the captain of the squad and then we've got Saud Shakil accompanying him as the vice captain. उसके साथ साथ अबरार अहमद, बाबर आजम, इमामुल हक का कमबैक, कामरान गुलाम, काशिफ अली डोमेस्टिक परफॉर्मर, खुरम शहजाद, मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद रिजवान द विकेट कीपर, नोमान अली, रुहेल नज़ीर बैकअप विकेट कीपर, साजिद खान एंड सलमान अली आगा. दिस इज़ द स्क्वाड दैट हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द पीसीबी. और जो 7 प्लेयर्स जो कि ड्रॉप या इंजरी के बायस बाहर हुए हैं उनमें अगर देख लें तो वी हैव नंबर 1 आमिर जमाल हैज़ बीन ड्रॉप फॉर हिज पुअर परफॉर्मेंस इन द सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका. उसके साथ साथ अब्दुल्ला शफीक जिन्होंने एक बहुत डिज़ास्टरस बैटिंग उनकी रही थी ओडीआई सीरीज़ में. बट अगेन एक डिबेट आ सकती है कि वॉज इट बिकॉज क्या आपने दोनों फॉर्मेट मिक्स कर दिए हैं. आपको पता है कि अब्दुल्ला शफीक का रिकॉर्ड कितना अच्छा है इन टेस्ट क्रिकेट. तो अब्दुल्ला शफीक हैज़ बीन ड्रॉप फॉर दिस पर्टिकुलर सीरीज़ एज वेल. हसीबुल्ला जो कि स्क्वाड के साथ पिछले 2-3 टूर्स पे रहे हैं एज बैकअप विकेट कीपर, वो इंजरी के बायस बाहर हैं स्क्वाड से. एंड देन वी हैव मीर हमजा एंड मोहम्मद अब्बास बीइंग ड्रॉप्ड फ्रॉम द स्क्वाड कंसिडरिंग कि स्पिन पे विकेट्स होंगी इसलिए स्पिनर्स का हैवी स्पिन अटैक के साथ जाएंगे. और उसके साथ साथ साइम अयूब जिनका हम सबको पता है इंजरी के बायस बाहर हैं और अभी वो लंदन में हैं फॉर हिज टेस्ट एंड ट्रीटमेंट एंड वी आर अवेटिंग रिपोर्ट्स रिजल्ट्स to determine his participation in the Champions Trophy as well. और साथ साथ नसीम शाह जिनका बोला जा रहा है कि रेस्ट पे हैं क्योंकि आगे चैम्पियंस ट्रॉफी आ रही है, उसके लिए नसीम शाह को फुली फिट होने देंगे तो इसलिए नसीम शाह को भी ऐड नहीं किया स्क्वाड में. तो अगर आप स्क्वाड बहुत गौर से देखें तो वी हैव द स्पिन ऑप्शंस जिसमें अबरार अहमद आ जाते हैं. उसके साथ साथ हमारे पास स्पिन में नुमान अली और साजिद खान. नुमान अली, साजिद खान, you all know they were devastating against England in the series that Pakistan won 2-1 or we are expecting the same kind of pitches that will assist the spinners जिसकी वजह से पाकिस्तान एक बहुत हैवी स्पिन अटैक पे गई है. और अगर आप इंक्लूजन देखें फास्ट बॉलर्स की तो मोहम्मद अली की वापसी हुई है स्क्वाड में. काशिफ अली जो कि डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं, ही इज़ ए फास्ट बॉलर इज वेल, पेस बॉलर, तो उनको ऐड किया गया है स्क्वाड में. और उसके साथ साथ खुरम शहजाद हैज़ बिन रिटेन्ड इन द स्क्वाड एज प्रॉब्ली द प्राइमरी फास्ट बॉलर. और देखा ये जाएगा कि शान मसूद को टॉप ऑफ द ऑर्डर कंपनी कौन करेगा. विल इट बी इमामुल हक जो कि कम बैक कर रहे हैं एक बहुत अरसे बाद और उन्होंने बहुत ज़्यादा रन्स भी डोमेस्टिक में बनाए हैं. ही इज़ बिन अ प्रूवन परफॉर्मर देयर और ड्रॉप होने से पहले भी टेस्ट क्रिकेट में एटलीस्ट ही वाज स्कोरिंग रन्स कंसिस्टेंटली. या होंगे मोहम्मद हुरैरा जो कि पिछले 4 से 5 टूर्स में पाकिस्तान के साथ नज़र आए हैं और डोमेस्टिक में भी एक अच्छा परफॉर्म करते रहे. थोड़ा सा लीन पैच उनका आया है डोमेस्टिक में बट वी कैन नॉट डाउट हिज क्वालिटी, द काइंड ऑफ बैट्समैन ही इज एंड द काइंड ऑफ रन्स दैट ही हैज स्कोर्ड इन डोमेस्टिक क्रिकेट. सो we've got a lot to look forward to in this particular series. और इसके साथ साथ हमारी PSL की डायमंड कैटेगरी भी अनाउंस हो गई है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा as soon as the platinum category is announced. और उसके साथ हम एक PSL स्पेशल एडिशन भी करेंगे जिसमें हम लोग सारे स्क्वाड्स को रिव्यू करेंगे जो रिटेन किए गए प्लेयर्स हैं और जो ड्राफ्ट में प्लेयर्स जा रहे हैं उनको. इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडिया की आज रिव्यू मीटिंग भी है रिगार्डिंग BGT, रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस इन BGT ऑफ ऑल द प्लेयर्स. गंभीर, रोहित शर्मा, अजीत अगारकर की BCCI के साथ मीटिंग है जिसमें सारी चीज़ें रिव्यू होंगी. एंड BCCI ने एक्सटेंशन मांग ली है रिगार्डिंग द स्क्वाड अनाउंसमेंट फॉर द चैम्पियंस ट्रॉफी. कहना यह है द रीज़न दैट वाज साइटेड वाज कि उनका बिजी स्केड्यूल था BGT में जिसकी वजह से दे डिड नॉट हैव इनफ टाइम टू रिव्यू द स्क्वाड बिफोर पुटिंग इट आउट देयर. और न्यूज़ यही आ रही है कि द रीज़न फॉर द डिले कुड बी कि बुमराह की इंजरी स्केयर, उसकी रिपोर्ट्स क्या आएंगी. नंबर 2 कुलदीप यादव, उनका क्या आगे है, इंजरी के बाद वापसी आएंगे नहीं आएंगे, फिटनेस क्या है. नंबर 3 मोहम्मद शामी जो कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि क्लियरेंस मिल गई है फ्रॉम द NCA टू पार्टिसिपेट इन द चैम्पियंस ट्रॉफी एंड ही हैज़ बीन डिक्लेयर्ड फुली फिट. उसके साथ साथ अर्शदीप, क्योंकि अभी हम इंडिया में रिसेंटली डोमेस्टिक टूर्नामेंट भी चल रहा है जो कि 50 ओवर है, तो अर्शदीप की पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो
something that the Indian board is looking to add for the ODI format. اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹنگ آرڈر میں دیکھا جائے گا کہ رشبھ پنت ہوں گے یا کے ایل راہل ہوں گے who will keep the wickets, but reports again یہی آ رہی ہیں کہ کے ایل راہل will be given a nod ahead of رشبھ پنت. ساتھ ساتھ شرییس ایئر کی واپسی ہوگی او ڈی آئی اسکواڈ میں یا نہیں, کیونکہ وہ بھی انجری کی وجہ سے اور پھر پور فارم کی وجہ سے باہر ہو گئے تھے. سو انڈیا کے اسکواڈ میں بھی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ابھی فائنلائز ہونی ہے, جس کی وجہ سے they asked for more time. اور ساتھ ساتھ پاکستان کا بھی اسکواڈ اناؤنس نہیں ہوا ابھی تک, and we're looking forward to everything that will be coming up in the cricketing world as time goes on. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انڈیا ورسز انگلینڈ کی بھی لمیٹڈ اوور سیریز آ رہی ہے, سو وی آر ایکسپیکٹنگ انڈیا ٹو اناؤنس جسٹ their T20 اسکواڈ in a day or two as well. وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا ان ڈیٹیل. تو ابھی کے لیے پاکستان نے اسکواڈ اناؤنس کر دیا ہے, and the probable 11 for me that I see would be کہ شان مسعود will be opening the batting with امام الحق, and then we've got بابر اعظم at one down جس کے ساتھ کامران غلام آئیں گے, اور اس کے بعد پھر سعود شکیل آئیں گے نمبر 5 پوزیشن پہ. نمبر 6 اور نمبر 7 پوزیشن محمد رضوان اور سلمان علی آغا کی ہے جو کہ کھیلیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ we will have the spin duo of Sajid Khan and Numan Ali, proven performers in Pakistan, and keep in mind that this series will be played in Multan. اور ملتان میں ایک ٹیسٹ میچ جو پہلا ہارے تھے اگینسٹ انگلینڈ, اس کے بعد جو اسپن ٹریک عاقب جاوید نے بنوائی تھی اس پہ ہم سب نے دیکھا تھا کہ انگلینڈ بیٹسمین کا کیا حال کیا تھا اسپن ڈوو نے. اور اس کے ساتھ ساتھ اٹ ول یٹ ٹو بی سین ویدر ابرار احمد ول بی پلینگ ایز دا تھرڈ اسپن آپشن, اور کیونکہ سلمان علی آغا اور سعود شکیل اور کامران غلام بھی اسپن آپشنز دیتے ہیں, یا ول اٹ بی خرم شہزاد ود fast bowler who could be Muhammad Ali because he has the capability to bowl long spells, or could it be Kashif Ali who can be given a debut as well. So there's a lot to look forward to there as well, and time will surely tell کہ کون کھیلے گا, کون ڈراپ ہوگا اور کون سلیکٹ ہوگا in the playing 11. But اس اسکواڈ میں جن کی واپسی نہیں ہو سکی وہ ہیں شاہین شاہ افریدی, and the reason again is the same جو کہ نسیم شاہ کا ہے کہ we have the Champions Trophy coming up in a month's time, and we expect all our bowlers to be fully fit for that, کیونکہ آپ کی جو پیس فیکٹری ایکسپیکٹڈ ہے in the Champions Trophy who will be selected are شاہین شاہ افریدی, نسیم شاہ, محمد حسنین and حارث رؤف. So this is the likely pace battery that Pakistan will go with in the Champions Trophy, اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے گا اور کس کو سلیکٹ کریں گے. تو this is the reason why شاہین شاہ افریدی was not included in the squad. تو باقی آگے آپ کو اپڈیٹس ہم پرووائڈ کرتے جائیں گے جو ساتھ ساتھ آتی جائے گی. پی ایس ایل ایڈیشن بھی ہم آپ کے ساتھ کریں گے, اور پی ایس ایل ایڈیشن میں we've got great names signed up for our gold category, for our silver category and the diamond category as well. ہم نے سلور, ڈائمنڈ, سلور اور گولڈ کا ہم نے بہت ایک ڈیٹیلڈ انالیسس کیا تھا پچھلی ویڈیو میں, جو کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ہماری چینل پہ. اور ہم انشاءاللہ as soon as the platinum list is out, we will be reviewing that along with the diamond category, and ہم لوگ ریویو کریں گے اسلام آباد, پشاور, لاہور, کراچی and کوئٹہ, these 5 and ملتان, these 6 franchises. انہوں نے کس کو ریٹین کیا, کس کو ریلیز کیا, اور کون کتنے پلیٹینم کیٹیگری میں کس کی پک کب ہے. So we've got a lot of cricket looking forward to, and we've got exciting times coming ahead for the cricketing world as well, and we will be bringing you with all the updates as time goes on and as every news comes out. تو until then میں اجازت چاہتا ہوں. آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک دی ویڈیو, شیئر with your friends, family and the cricketing fraternity, and do not forget to comment who you think will open the test match opening batting with Shan Masood, whether it will be Imam ul Haq or Mohammad Al Daira. So until then, Uzair Rahman signing off.